प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मराठा बनाम ओबीसी। रोजगार की राजनीति होनी चाहिए, रोजगार लोगों को चाहिए। आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं है क्या नांदेड़ में? पीक एक नंबरची आहे, आपने एमएसपी नहीं मांगी? नहीं मांगी। Not easy being a farmer in this country. Namaskar, hello and welcome to this India Today special, Maharashtra Majha. My Maharashtra, as we travel across this election battleground state that goes to the polls in just over a week from now. I'm in Latur at the moment in Marathwada, and here on the ground, the political temperature is rising. Just 24 hours earlier, the Prime Minister and other leaders have been crisscrossing Maharashtra, and the new slogan that the BJP has, which is splashed across newspapers in Maharashtra today, is "Ek hai to safe hai." And that has led to a fierce debate, with the opposition claiming this is a deliberate attempt to try and communally polarize the electorate, play the politics of Hindus and Muslims. Now, one of those speeches that the Prime Minister made was in Nanded. I was in Nanded today, a city, a town which has large Hindu, Muslim and Sikh populations. And I asked them how they saw the Prime Minister's remark. Take a look at what the view on the ground from Nanded was. Okay, my first stop here on Maharashtra Majha today is in Nanded, which is a town of great historic, cultural and religious significance. Remember, this is where you have a number of gurdwaras associated with Sikhism and Guru Nanak and Guru Gobind Singh. Of course, Nanded this time is being identified with rising political temperature. It's been a Congress bastion over the years because primarily dominated by the Chavan family. But this time, Ashok Chavan switched over from the Congress to the BJP. His daughter is contesting here. So you've got a bit of family politics. But Nanded is important for another reason as well. Large minority population here. And the question then is, will the politics of polarization of ek hai to safe hai or batenge to katenge actually work on the ground? Let's find out. मला सांगा, या इलेक्शन मध्ये मोठा मुद्दा कुठला आहे? हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनेगा? प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मराठा बनाम ओबीसी। मुद्दा कुठला आहे महाराष्ट्रात यावेळी? कटेंगे तो बटेंगे। कटेंगे तो बटेंगे? इसका मतलब क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब है कि जो हिंदू वोट है वो अगर बटेगा तो अगली चुनाव में बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्या मुश्किल होगा? कोई एक धार्मिक नाम लेके जो कोई इलेक्शन लड़ा रहा है वो अगले इलेक्शन में वैसा ही होता रहेगा। नहीं, पण रोजगार, विकास ह्याच्यावरती कोण बोलत नाहीये। आप लोगों को रोजगार कहाँ दे रहे हो? यहाँ रोजगार मुद्दा होना चाहिए। और एक बार अगर एकनाथ भाई शिंदे इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे तो 100% रोजगार महाराष्ट्र में आएगा। कांग्रेस की वजह से आज पिछले साल से हमेशा कांग्रेस की सत्ता रही, पूरे एमआईडीसी बंद, पूरे बेरोजगारी का कारण ही कांग्रेस है। अभी तो फिर तो आप लोग बेरोजगारी क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये बटेंगे तो कटेंगे कहाँ चल गया? ये तो पॉलिटिक्स, आप लोगों हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। धर्म का मुद्दा आएगा तो बिल्कुल हम एक रहेंगे तो सेफ ही रहेंगे ना। अभी तो आप सेफ नहीं है नांदेड़ में। सेफ तो फिर क्यों बोल रहा है एक है तो सेफ है? हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं है क्या नांदेड़ में? देखो, आगे वालों का जैसा बोलना रहेगा वैसा उत्तर तो हमारे को देना पड़ेगा ना। सब कुछ एक ही है, मगर जब बात वैसी आएंगी तो हमारा जवाब भी वैसी रहेगा। आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। धर्म मुस्लिम धर्म की जातिवाद नहीं होना चाहिए। फिर हो रहा है। की जनता बहुत समझदार है। यहाँ पे नांदेड़ की जनता, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई की तरह रहते हैं और यहाँ का इलेक्शन पुरोगामी विचार के आधार पर होने वाला है। कोई भी
कहीं बटेगा नहीं, कटेगा नहीं, ये सब बटेंगे कटेंगे की राजनीति नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नांदेड में तो बिलकुल नाही चलेगी. उत्तर विधानसभेचे उमेदवार अब्दुल सत्तार आहेत, ते मुस्लिम आहेत. त्याच्यानंतर लोकसभेला रवींद्र पाटील चव्हाण आहेत, ते हिंदू आहेत. त्याच्यामुळं असा विषय येऊ शकत नाही. हे एक राजकीय प्रोपगंडा आहे. इथल्या भाजपच्या या राज्यातल्या शासनानं हे सगळं भांडवलदारी केलेली आहे. जातिवाद बनाम धर्म की राजनीति, विकास कहाँ है? दैट्स द क्वेश्चन. कम विद. Now, like many parts of Marathwada, Nanded too has a large minority population, especially Muslims. So I thought I would find out how is batenge to katenge or ek hai to safe hai resonating now in the Muslim pockets of Nanded. मुझे ये बताइए, एक तरफ तो धर्म की राजनीति होती है, दूसरी तरफ मराठा बनाम ओबीसी की राजनीति होती है. असली राजनीति, असली मुद्दे कोई उठा रहा है या नहीं उठा रहा है? जनता के मुद्दे उठ रहे हैं कि नहीं? कोई नहीं उठा रहा. इनके खुर्चा इन्हों देख रहे. आपने गोर गरीब जनता की फसलों को इसमें रोजगार के नाम पे कोई नहीं है. तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलेगी या नहीं चलेगी? लगाने वाले भड़वेगिरी लोग आए. हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है. यहाँ कोई धर्म की राजनीति ज्यादा चलती है या लोग विकास के नाम पे बात करते हैं? जिन लोगों को अपना घर भरना है उन्होंने धर्म की राजनीति कर रहे हैं. और जिन लोगों को विकास करना है, जिनको देश की तरक्की कराना है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं. पर इस पर फिर वोट क्यों नहीं होते? अशोक चौहान इतने सालों तक तो जीत कर आ रहे थे, वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए हैं. कभी इन मुद्दों पर बात हुई है कि रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को, या केवल चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम हो जाता है या मराठा बनाम ओबीसी हो जाता है? नहीं, चुनाव आते आते बेरोजगारी की कोई बात होती नहीं है. और हिंदू मुस्लिम होने की वजह से जो है जज्बाती वोट जो है, जो समझदार लोग नहीं होते, जो जज्बात भोले भाले लोग होते हैं, वो जो है अपने जो जातिवाद इलेक्शन लड़ते हैं उनको वोट देते हैं. तो जज्बात पर वोट होगा या इस बार जज्बात पे वोट नहीं होगा. इस बार जो है विकास पे वोट होगा. हिंदू मुस्लिम एक साथ है नांदेड़ में? बिल्कुल साथ है. ये नेता आपको डिवाइड करने की वो मराठा आरक्षण हो या ओबीसी आरक्षण हो, अब मराठा, ओबीसी, मुस्लिम, दलित ये जाग चुका है, समझ चुका है इनकी नीयत तो क्या है, और आप डट के वोट देंगे. Now you cannot come to Nanded and not visit the Hazur Sahib, which is a very holy place for the Sikhs. This is Guru Gobind Singh's eternal resting place, and therefore Nanded has a large Sikh community as well. Let's go and meet the Sikhs of Nanded. Come with me. नांदेड़ में हिंदू मुस्लिम सिख का कोई डिवाइड कुछ नहीं. इतने सालों से आप यहाँ हैं? कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, कोई झगड़ा नहीं. कोई झगड़ा नहीं, अभी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं. सब हम मिल के रहते हैं यहाँ, सब एक साथ रहते हैं, अच्छे. तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, जब नांदेड़ आते हैं इसका मतलब क्या है? नांदेड़ आते सब है. कैसा है, ये बांटने की बात नहीं है सेफ है बोलने के लिए. ये बांटने की बात ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर. मिलके ही रहते हैं पहले से. कोई गलत नहीं बोले इसमें. ऐसा गलत शब्द निकाल, उसका अर्थ गलत निकाल रहे हैं. ये गलत शब्द कुछ भी नहीं है इसके अंदर. प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, कहा था एक है तो सेफ है. एक है तो सेफ है मतलब ये आप मुझे बताइए. सब एक साथ रहेंगे तो ही सेफ है ना. एक है तो सेफ है क्या मतलब? ये मुझे बताइए, चुनाव के टाइम पे धर्म और जाति की राजनीति ज्यादा होती है या विकास की राजनीति होती है? धर्म की ज्यादा होती है. धर्म की होती है? बिल्कुल होती है. यानी लोग हिंदू मुस्लिम सिख को बांटने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल वही करते हैं, नहीं तो राजनीति कहाँ होती है. हिंदू मुस्लिम करके तो वोट लेते हैं. प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं नांदेड़ में और वो कहते हैं एक है तो सेफ है. किस तरह से देखते हैं आप? हम सेफ है. अगर प्रधानमंत्री है तो हम सेफ है. नहीं तो आज जो योगी जी ने बोले बटोगे तो कटोगे, तो ये हकीकत होगी. बटोगे तो कटोगे, ये सही है या केवल धर्म को लोगों को बांटने की कोशिश है? करेक्ट है, बिल्कुल सही है. देशाचं संरक्षण करणं महत्वाचं आहे. हा, देशाचं मोदी सारखा विकास कोणीच केला नाही. नाही, संरक्षणवर तुम्ही वोट देणार की महागाई? आम्ही विकासावर वोट देणार. संरक्षण विकास झाला, खूप विकास झाला. एक है तो सेफ है सर. ये तो सर एक अपना ऐसी बात है जो वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम फंडा ये फंडा, वैसे ही बात है सर. हिंदू मुस्लिम करने के लिए
ये बताइए, चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम सिख का कोई डिवाइड है? प्रधानमंत्री नांदेड़ आते हैं, कहते हैं एक है तो सेफ है, कैसे देखते हैं? ये बात तो सही है कि एक है तो सेफ है, पर हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाली ये राजनीति लड़ाई होती है बस। बाकी आपस में तो भाईचारा पूरा है यहाँ पर। सिखों का हिंदू मुस्लिम कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। एक है तो सेफ है, वोट बैंक की राजनीति। क्यों? उसमें वोट बैंक क्या है? इतने सारे कास्ट वाइज चल रहा पूरा, फिर ये कास्ट वाइज चल रहा है। नांदेड़ में कास्ट वाइज चल रहा है, ये हिंदू, ये मराठा, मराठा, ओबीसी, ओबीसी, ये बौद्ध समाज, ये ऐसा चल रहा है सर अभी फिलहाल। अनार जूस। राजदीप सरदेसाई इन नांदेड़ फॉर महाराष्ट्र माझा। So let's raise the big questions. Is this now a battle in Maharashtra at one level between Hindutva versus caste politics? Does politics of religion and caste still resonate in states like Maharashtra? Are these all communal dog whistles being played out before the elections in Maharashtra? And do real issues lose out to caste and communal politics? These are some of the big questions I will raise on the debate. I'm joined by Sudhindra Kulkarni. He's of course been a former BJP National Executive Member. He's now an independent columnist and writer. I'm also joined by Dr. Ajay Alok, the BJP's national spokesperson, and Mohan Kumaramangalam, the Congress's national spokesperson. But before I come to my guests, I just want to play out what Prime Minister Modi said and how Asaduddin Owaisi responded when I caught up with him on the campaign trail in Aurangabad. Listen in. जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो The Prime Minister said in his Maharashtra address, "Ek hai to safe hai," effectively, seemingly suggesting unite and we will be safe, divide and anything can happen. How do you interpret the Prime Minister's statement? I would first reply to that comment by saying, "Anek hai to akhand hai." Anek hai to akhand hai. Because see, the diversity of this country is the strength, and that is the identity of India. The diversity. The Prime Minister does not believe. He wants to make it ek. How can you make it ek? He's saying united. Ek ka matlab unka united hai. No, that is not. The Prime Minister is a strict follower of Golwalkar. You have to read his writings, his articles on Golwalkar. He believes in what RSS says. See, they don't believe in diversity. They say unite karo. When RSS and BJP say unite, that means the eradication or the erasure of the diversity of this beautiful country. Okay, let's go then straight across to our guests who've heard what the Prime Minister said, what Asaduddin Owaisi responded with. I want to start with you, Sudhindra Kulkarni, because you have come out very strongly today and called this a communal dog whistle. Let's get it straight. The Prime Minister says he's talking about ek hai to safe hai, saying India must be united. Why do you believe that this is very similar or akin to Yogi Adityanath saying batenge to katenge? Why do you think this is a communal dog whistle? Rajdeep, this is ek hai to safe hai, which is all over newspapers in Maharashtra today. It's just a new version, a new iteration of the earlier slogan, batenge to katenge, which was being popularized by the BJP and unfortunately supported, legitimized even by the RSS. A very senior RSS functionary officially supported it. Ek hai to safe hai. Safe hai, the very word safe means that there is a threat to a section of Indian society from within Indian society.
I mean, it doesn't take much of intelligence to know who are being targeted. It is being targeted to the Hindu voters, that Hindu voters should unite because there is a threat to their safety and security. The Prime Minister is not saying एक है तो समृद्धि है, एक है तो विकास है, एक है तो सबकी तरक्की है, सबका विकास, सबका विश्वास. This is not what he is saying today. He is saying एक है तो safe है, which means that he is creating a fear psychosis in a section of Indian society. And this fear, this threat to safety is coming from within Indian society, which is the meaning of एक नहीं होंगे तो हम कट जाएंगे, एक होंगे नहीं तो हम safe नहीं रहेंगे. Now, similar fear psychosis is also being created in a section of Muslim community by certain Muslim leaders. Just as that is communal, that is divisive, similarly the BJP's new slogan is also divisive. The BJP should have gone to the voters exclusively and completely on the basis of their administration, on the basis of their record of what they have done for people's welfare. And unfortunately, that has now relegated to the background. Now it is fear psychosis. It is an attempt to consolidate the Hindu vote bank. It is an attempt to show that there is a threat. Can I just stop you for a moment? The Muslim community. Can I just stop you for a moment, because I want to hear from what you've said. Communal. You've said that. You've said this is fear psychosis politics. It's communal. Okay, you're saying it's communal, even anti-national. Ajay Alok, please respond. You're hearing Sudhindra Kulkarni, who's been a former BJP national executive member, saying he believes this is a communal dog whistle. This is aimed at dividing people, at the same time consolidating a Hindu vote bank. How do you respond to what you just heard? Well, he is entitled for his own vision and what he calls the communal dog whistle, but that dog whistle he doesn't hear. And he doesn't, I think there's some problem in hearing when this kind of dog whistle is being done by the Ulema board, writing 17-point demand, asking for Muslim reservation and everything so that every Muslim will vote for Maha Aghadi. He doesn't hear that dog whistle in Kerala when today 1,000 church went into protest against the Waqf board. Sudhindra Kulkarni doesn't listen to that dog whistle. He doesn't listen to that dog whistle in Bangladesh when Hindus are massacred. No. That is not at all communal. That is absolutely secular thing. Let's not discuss about it. But yes, when we say एक है तो safe हैं और बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे नहीं, निर्ममता से कटेंगे. That he finds communal. Right from the childhood we have been listening to all this. United we stand, divided we fall in English. And if we say it in Hindi, एकता में शक्ति है तो बड़ा अच्छा है. But when we say बटेंगे तो कटेंगे, that becomes a communal dog whistle. What kind of a word? Communal dog whistle. No, who is it aimed at? No, sir, who is it aimed at? Forget about whataboutery. Forget about whataboutery. Who is it aimed at? Who is batenge to katenge ya ek hai to safe hai? Who is it aimed at is what he is raising. When the country is united, country is safe. Ek hai to safe hai. What's wrong in that? और बटेंगे तो कटेंगे ये तो देख ही रहे हैं. कट रहे हैं, बांग्लादेश में कट रहे हैं, हर जगह जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहां कट रहे हैं. If this country is today, if this country is secular, if this country is safe, it's because the Hinduism is prevalent here. The demography change I talk about is being propagated, it's being supported, and it's just being accelerated by all the kind of opposition party who believes in appeasement politics. The people from Bangladesh, people from Rohingya, all are getting settled. They are being provided with voter ID card and every kind of help. This is what is disintegrating the things. And we have to, if we are there, we have to look and we have to say. And if a clarion call is being given that ek hai to safe hai, aur batenge to katenge, what's wrong in that? How come it becomes a communal dog whistle? Okay, Mr. Kumaramanglam, you've heard the BJP and Ajay Alok, they're saying very clearly, all they are doing is asking people to stand united. It's their opponents who are playing, he says, a selective kind of politics. You will not say it's a communal dog whistle if the Waqf board places various demands before the Maha Aghadi, but you will do so if the Prime Minister Yogi Adityanath makes these comments. Your response?
every community has a right to place their demands and form organizations. I mean, I don't see how that's a dog whistle. You know, Rajdeep, the greatest trick the devil ever played was convincing the world he doesn't exist. This is exactly what that reminds me of when Ajay Alok goes off on his tirade about Hindus being killed in Bangladesh and then actually saying that that's what Yogi Adityanath means when he says cutting edge. So he didn't have to say it. He's pretty much aiming directly at the Muslim community in Maharashtra. This is, you know, par for the course with them. This is old wine in a new bottle. We've all seen this movie before. It flopped miserably in Lok Sabha, and I guarantee you it will fail again. Because even though the Prime Minister is saying, saath rahenge to safe rahenge, people have realized that, Hindu khatre mein hai, but the khatra is from inflation, from unemployment, from draconian taxes on fuel, from concentration of the wealth and power in the hands of the few. वो wealth जो ना कभी कटेगा, ना बटेगा, ना बटने देंगे. कटेगा तो सिर्फ आम आदमी का. And काटेगा कौन? वो सिर्फ बीजेपी ही काटती है. This people have realized. So this dog whistling, whatever you want to call it, which comes around every election, is going to fail miserably again. For the last couple of months, we were entertained by. Yes, go ahead. But can I stop you for a moment? I am at the moment in Latur. In Latur, what I see is politics being played over Maratha reservation. I see politics where it is believed that the likes of Zarange Patil, the Maratha reservation agitationists, are being supported by the Maha Agadi. So when it comes to caste, then you can divide society and ask for votes on the basis of whether I'm a Maratha, I'm a Teli, I'm a Kunbi, I'm a Mali, I'm a Dhangar. But when it comes to Hindu versus Muslim, suddenly it becomes a divisive slogan. The point is, at election time, the real issues. I am in a place where farmers are crying for better prices, minimum support price for soyabean. That's the real issue that I want to hear. The farmers are not Hindus or Muslim, they're Indians. Why don't you raise the farmers' issues across party lines? Rajdeep, I don't think there is any one issue that any election is ever focused on. I am sure the farmers' issue is also being raised by the Maha Agadi. However, I will say that I find the suggestion that a particular community or caste is asking for reservation and we are supporting that ask as being divisive is completely ridiculous. Because if you were to follow that logic, then any ask of reservation by any caste would be divisive. I heard what Mr. Gadkari said when he said that hum caste ke against hai, hum jatiwad nahi hai. It's very nice to say that let's deny caste altogether or its existence when you're sitting on top of that pyramid that was created ages ago. So for anybody to ask for reservation is not divisive. If that was the case, then Dr. B.R. Ambedkar should be the most divisive figure in our history. So what is this false equivalence being created by the BJP? And why are we buying into it? Okay, can I, Ajay Alok, I will ask you one more time before I go to Sudhindra Kulkarni. Why not accept that the BJP now is playing brazen Hindu vote bank politics in Maharashtra? Because you think appealing to emotions can be a substitute for not providing enough jobs, not providing the kind of good governance that you promised in Maharashtra. So the easier way out is appeal as Hindus and Muslims, or pit Hindus versus Muslims. Rajdeep, first of all, let me tell you, and you also know this very well, there is nothing called as Hindu vote bank politics. Had Hindu been a vote bank, and we would have been playing that, do you think we would have met any opposition? Because as far as I believe, 83% Hindus is the population of this country. Had Hindu been Hindu vote bank politics would have been there, who would have been in opposition? You're trying to consolidate Hindus. So there is no Hindu vote bank politics. There is no question. There is only vote bank in this country. One vote bank. जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. Sir, in the 1990s you said जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. नहीं तो वो तो सही बात भी है ना. कटेंगे तो कटेंगे. वो तो सही बात भी है ना. एक है तो सेफ है. No, वो तो सही बात भी है ना. It's only a more sophisticated way of saying it. जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. Whom do you want कि इस देश पे कौन राज करे? जो मुसलमानों के हित की बात करे, जो क्रिश्चियंस के हित की बात करे, हाँ, जो हिंदू हित की बात करे वो देश पे राज नहीं करे. That's all. I don't think the majority of the people of this country agree to that point. Okay, let me bring in Sudhindra Kulkarni at that point. Sudhindra Kulkarni, you're hearing Ajay Alok is openly saying
Sir, Ajay Alok is openly saying, and you were part of the BJP in those days, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. That was 1990s. Now we are in 2024 and it's very similar. What's different? The BJP under Advani and Vajpayee also will be accused of playing the same politics that today they are being accused of playing under Prime Minister Modi and Amit Shah. Rajdeep, I was in the BJP for 16 years and I can say very confidently that had Vajpayee ji been alive today, he would have opposed the BJP raising the slogan, Batenge to Katenge, the BJP raising the slogan, Ek hai to safe hai. One more thing on record, when this slogan, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, when this slogan was raised, Advani ji himself said, I don't agree with this. जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. This is what Advani ji said. Don't misinterpret Advani ji on this point. Now, what the BJP today is doing is creating a fear psychosis, as I said earlier, that the threat to Hindus, the threat to safety of Hindus is coming from a section within India. My friend from the BJP is saying, Bangladesh में ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है. भैया, चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, बांग्लादेश में नहीं हो रहा है. And your slogan is creating a sense that there is a threat to Hindus from within Indian community, and that is from the Muslim community. And still you are saying that Sir, the attempt is not to consolidate the Hindu vote bank. This is sheer hypocrisy. Now let me give one more example of hypocrisy. Today, the Prime Minister has tweeted. Yes, I'll get to and Ajay I in a commend moment. the Prime Minister for this tweet. Yes. Today is the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. And in India's freedom struggle history, no Muslim leader opposed the partition of India as strongly as Maulana Azad did. And what did Narendra Modi ji said today in his tweet? He said, I read out, on his birthday, we pay homage to Maulana Abul Kalam Azad. He is fondly remembered as a beacon of knowledge and for his role in India's freedom movement. He was a deep thinker and a prolific writer. We remain motivated by his vision for a developed India and an empowered India. Now, this is what the Prime Minister is saying about Maulana Azad, the greatest Muslim leader in modern India. Right. So, all Muslims are certainly not a threat to Hindus. All Muslims are not creating any sense of a new division. Can I stop you for a moment because Ajay Alok needs to respond? It's only fair. Yeah, okay, let Ajay Alok respond. Ajay Alok, I think the charge which is being made by critics of what has been said is that somehow or the other there is a blanket demonization of a community. It may be subtle, it may be not so subtle at times, but it is there. And I repeat, is that really the issue which you want to go into an election when at one stage you speak about Amrit Kal and a Viksit Bharat? We also speak about Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. But when we say that there is a threat, but you please can't have go it and both visit. ways. And you have been in Maharashtra, so please go and visit Shivaji Man. Let me complete. Go and visit Shivaji Mankar, go and visit Baikula, go and visit Mumbai, and you just see how the demography is changing and who has changed the demography. It's not the Indian Muslim. It's not the Indian Muslim. And we do not consider Indian Muslim as a threat to this country or to the Hinduism. It is the illegal immigrants where the demography is being changed, a constant endeavor by all the opposition parties, what we are talking of. And the support given by the local indigenous Indian population to those immigrants and making them settled here. They are eating on our resources and they are producing damage for our country. They are a threat to the internal security. Haven't you heard of the sleeper cells? Darbhanga module, Kishanganj module, haven't you heard? And still you say that we are trying to create a fear psychosis. No, it's not a fear psychosis. You're raising it suddenly at election time. It is a fear. Sir, you are suddenly you're raising these fears at election time. Okay, you're raising these fears at election time only. No. You should then. No, you're it's in not charge a of fear national at the election security. time. That's your. We have been saying this for the last 20 years. It has been discussed in the parliament.
It has been discussed in the parliament Okay, by none can I other get than Mohan- UP Home Minister, Mohan who said that more than Kumaramanglam- 3 crores Rohingyas are here. Mohan And right now also Kumaramanglam they are is here. the... Okay, Mohan If you Kumar... are standing in Latur, please Okay, find Mohan how many demography Kumaramanglam, has is changed your there. approach to ignore... Okay, sir. Okay, Mohan Kumaramanglam, is your approach to ignore what Ajay Alok has just said on this show in the election campaign? Is it that the Congress party is saying the moment you get into it, you're playing on BJP's territory? I don't think we're playing on BJP's territory. But I think, as you pointed out earlier when you were talking about the farmers' issue as well, there are far more important issues that the people care about. Talking about things like illegal immigration, maybe he's taking a page out of Mr. Trump's campaign that just got over. Where seriously, they've been in power for the last decade, over a decade now, and they're still continuing to use issues like illegal immigration, which actually should be their job to fix if what they're saying is true at all. What happened to NPR, NRC, and all the noises that came after CAA? Nothing happened. You shelved all of it, only so that you can use this sort of divisive rhetoric in every election that comes about, where you failed to administer the state or to do anything good for the people of the state. So you rely on things like this in the end. Thankfully, it's failed once, but obviously you're not taking any lessons from Lok Sabha. You're piling up. Okay, let me leave it there. As I said, I'm in Latur, which is a place where farmers' issues are dominating the political conversation here at the moment. So therefore, it may seem almost a world apart when I hear politicians talking about Hindu-Muslim issues. On the ground, when I meet people, that certainly is not what is top of the mind. What is top of the mind? As I thank my guests, the farmers of this part of the country are restive, particularly the soyabean farmers. They haven't simply got their price for their crop. And soyabean is actually at the moment covering the largest acreage in Maharashtra, spread across as many as 67 constituencies in the state. What's the mood on the ground? Take a look at one of the real issues that confront the farmers of Maharashtra. Okay, our travels on Maharashtra Majha have brought us to Latur and to the main mandi in Latur town here in Marathwada. As you can see around me, soyabean is strewn on the streets. And in 2024, soyabean is arguably the most political crop in this election season. Many believe that sugarcane and cotton are the crops grown in Maharashtra. The truth is, soyabean actually covers more acreage than any other crop in this region. About 67 of the political constituencies in Maharashtra have soyabean as a major crop. And the problem is that this year the farmers say they've got soyabean at a price well below the minimum support price promised by the government. 4,800 plus promised by the government, soyabean reportedly selling at rupees 4,300 a quintal. Will soyabean then become a major issue in this election in Maharashtra? That's what I want to find out as I come to the mandi here. I'm first joined by two leaders of the Shetkari Sangatna. काय नाव तुमचं? अरुणदादा कुलकर्णी. कुलकर्णी साहेब आणि आपला? सत्तार पटेल, व्हाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. अच्छा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. Remember, this is Raju Shetty's party, so the third force in Maharashtra politics that claims that they represent farmers' issues. आणि आपण शेतकरी संघटनाचे आहात. मला हे सांगा, इस साल सोयाबीन का दाम कितने में आपको मिल रहा है? पर क्विंटल कितना मिल रहा है सोयाबीन? पर क्विंटल का भाव आज 4100, 4200, 4100, 4000, 4200, 4300. और सरकार ने कितना प्रॉमिस किया था? 4892 रुपए, लेकिन 4,892 प्रॉमिस किया था. लेकिन आपको मिला है 4,100 की 4,200. बरोबर है का? ये बनता दीजिए. हाँ, मेरे को ये बताओ, पिछले साल कितने में मिला आपने बेचा था सोयाबीन? पिछले साल 52. कितना? 52, 5200 रुपए. 5,200 में आपने बेचा था पिछले साल. तो जे तुम्ही 5,200 मध्ये विकलाय, या वर्षी 4,100.
4,200। हमने एमएसपी नहीं मांगी, पहली बात ख्याल में लो। आपने एमएसपी नहीं मांगी? नहीं मांगी। तो क्या मांगी थी? 1 क्विंटल सोयाबीन बनाने के लिए हमको 7,000 रूपये खर्च आता है। 7,000 से खर्चा आता है। हाँ। और गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर कर दी कि 4,892 रुपया, लेकिन हमने इसकी मांग नहीं की थी। अच्छा, इसके बावजूद गवर्नमेंट ने कहा कि हम खरीदी करेंगे 13 लाख टन। क्या 13 लाख टन हम खरीदी करते हैं? तो लातूर के अंदर आज हमने मालूमात ली है, सिर्फ और सिर्फ 300 क्विंटल माल उन्होंने खरीदी किया है। वहाँ पर किसान जाने के लिए तैयार नहीं। उनकी जो अटी शर्तें हैं इतना ज्यादा है कि किसान उधर नहीं जाते हुए हमारी ये मंडी में आता है। और मंडी में भाव कम क्यों है, पहले ये देखिए। उसकी असल बात ये है कि गवर्नमेंट ने सोयाबीन के किसान को दाम मिलने के लिए डीओसी इंपोर्ट की है। सबसे बड़ी मेन बात डीओसी का मतलब? डीओसी मतलब एक बाहर से इंपोर्ट किए। डीओसी इसको कहते हैं कि जब सोयाबीन 1 क्विंटल बनता है, फैक्ट्री में डाला जाता है तो 18 किलो तेल निकलता है, 82 किलो डीओसी निकलती है, जो पशु खाद्य कहते हैं, जानवरों के लिए, मुर्गी के लिए लगता है। वो हमारी एक्सपोर्ट होना चाहिए यहाँ से। तो गवर्नमेंट यहाँ के किसानों को मारने के लिए बाहर की डीओसी लाती है, तो यहाँ के व्यापारी बेचारे क्यों खरीदेंगे ज्यादा दाम से? व्यापारियों का कोई दोष नहीं है। पर आप एमएसपी नहीं चाहते हैं? एक मिनट, आप एमएसपी नहीं चाहते? एमएसपी इतनी कम है, हमारी लागत 7,000, 8,000, 10,000 लागत है। नाही, पण दुसरी कुठली पीक घ्या ना, सोयाबीनच काय पाहिजे तुम्हाला? सोयाबीन जो है वो अच्छा आता है, इसलिए पेरते ये लोग। दूसरा पीक ठीक नहीं आता, इसलिए ये कपास गन्ना बाकी क्यों नहीं? गन्ने को पानी लगता हाँ, गन्ने को पानी लगता है। एक मिनट, हाँ क्या बोलो? गन्ने को पानी लगता है। कई से पानी नहीं है, इतना पानी नहीं है। पानी नहीं है, खत्म हो गया। रेलवे से पानी मंगाना पड़ता है पीने के लिए लातूर को। क्या करना? ये इतिहास है। महीने में कितने बार पानी आता है यहाँ? महीने में 2 बार। जरा दिखाओ वो मंडी में क्या है, देखे तो सही। इतने बोरिया, अरे बाप रे। मग चांगलं झालंय की नाही? 1 नंबर है। हाँ 1 नंबर आहे, पीक 1 नंबरची आहे, पीक 1 नंबर है, पण दाम मिळत नाही। दाम कम है इसमें। पीक 1 नंबर है। हाँ, पीक 1 नंबर क्रॉप है, क्रॉप 1 नंबर का है, मगर दाम 3rd क्लास का है, दाम नहीं मिल रहा। अब दाम नहीं मिल रहा है। अब इसका किसान आत्महत्या कर रहे। कितने किसानों ने लातूर में आत्महत्या की है पिछले 1 महीने में? 17 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और सब ये सोयाबीन के किसान है। मला एक सांगा, पण एका वर्षात तुम्हाला किती खर्च लागतो सोयाबीनचा 1 एकरसाठी? पूर्ण जर खर्च सोयाबीनचा काढला तर एका एकराला 10,000 रुपये खर्च लागतो। नाही, त्याचं मिळतं किती? काही मिळत नाही आम्हाला। काही मिळत नाही। आम्हाला। सर 1 मिनिट, तुम्ही बँकला जाता की सावकारला जाता? आपको लोन नहीं देता है बैंक? उभं सुद्धा होऊ देत नाहीत। तर मग कोणाकडून लोन घेता तुम्ही? 4 रुपये। दिस इज द स्टोरी. दे डोंट गेट द लोन फ्रॉम द बैंक, दे हैव टू गो टू द मनी लेंडर. आणि किती इंटरेस्ट रेट घेतो मनी लेंडर? 5 रुपये, 15 रुपये, म्हणत तसं आहे, ते फिक्स नहीं है। आता अब आइए पटेल साहब, आप बताइए, आप लोग कहते हैं आपकी संगठन है, ये सब तो मसले हैं तो कई साल से है, तो आप लोगों ने क्या किया ये उठाने के लिए? बीजेपी, यहाँ बीजेपी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, क्या किया उसके लिए? बीजेपी की सरकार जो 10 साल से हम देख रहे हैं, ये पूरे उसके पहले कांग्रेस भी थी, तो कांग्रेस का तब भी माना ये किया था, तब भी किसान आत्महत्या करते थे। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2012 की मेरे पास रसीद है, जब सोयाबीन बिका था 4,350 मंडी में, और आज 2012 में मेरे पास रसीद है, मैं बता सकता हूँ प्रूफ। ये आप कह रहे भाजपा, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो हाँ, जब कांग्रेस के टाइम पर भी आत्महत्या हुई है किसानों की, ऐसा असं नहीं है की आत्ताच सुरू झालंय? बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही। वो टाइम में एक 5-6 किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन आज आत्महत्या बढ़ गया है। ये रसीद देखिए, ये जरा 2012 soybean was being sold at 4,350 per quintal. Today the price is 4,200. मला सांगा, आप कह रहे हैं क्या सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया? ये नहीं, सरकार ने कई स्कीम की है, क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम की है। अब वो कह रहे हैं कि फार्म लोन आपका, आपने जो कर्जा लिया है उसको माफ करेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे।
ये हुआ है नहीं हुआ है? कब हुआ है? कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आप भी तो कर रहे हैं, इलेक्शन के आगे आगे कर रहे हैं। पहले क्या करे? मेरे ऊपर लाख रुपए का ये इलेक्शन का इलेक्ट्रिसिटी का बिल खेत का मेरे ऊपर है लाख रुपए। 1,500 रुपये मिळतात की नाही तुमच्या बायकोला? नाही लाडली बहीण मध्ये मिळत आहे तो 1,500 रुपये तो आपको वो मिल रहा है लेकिन उससे क्या होता है, खर्चा ज्यादा है ना। शेतकऱ्यांसाठी कोणी काय केलंय का? फक्त नारळ फोडणे, हार घालणे, उद्घाटन करणे, बोर्ड लावणे आणि निघून जाणे। सरकार किसी की भी हो, किसानों की लूट अटल है। सरकार किसी पक्ष की भी हो, हमारा किसानों का भरोसा किसी पर भी नहीं रहा, किसी पर भी नहीं रहा। सोयाबीनचा भाव जास्त आहे, सोयाबीनचा भाव कमी आहे, मग तेलाचा भाव कमी करा। हिंदू मुस्लिम राजकारणचं तुम्हाला काय लेणं देणं नाही? मराठा ओबीसी राज्य काय नाही, तुम्हाला फक्त शेतीचा भाव पाहिजे बस, राईट? शेतकरी हो, हम किसान भाव, बस आपल्या मालाला भाव. ओके. नमस्कार ताई. नमस्कार. किती मिळतं दिवसाचं हे करायला? 200-300 200-300 400 रुपये. आणि किती तास काम करावं लागतं? हा? लई तास म्हणजे किती तास करता? सकाळी किती वाजता येता? 11 वाजता. आणि किती वाजता घरी जाता? 12ला, कवा 1ला, कवा 2ला. रात्री? हा. तुम्हाला हे लाडकी बहीण सरकारने दिले 1,500 मिळाले की नाही? कुणाला? तुम्हाला आपल्याला पैसे मिळाले नाही सरकारकडून? नाही. म्हणजे तुमचा गुजारा होतो की नाही ह्याच्यात? आणि तुम्हाला किती हमालिकासाठी किती मिळतो? 500-600 दिवसाचे. 700-800 पडतात. आणि किती उठवायला लागतं? आता मोगम कट्टा बी असते, ही शेतकरी आता ही मोगम नाही होई. बघूया किती आहे. 50 किलो आहे. 50 किलो? अरे बापरे. बसायला टाइम मिळतो की नाही? जेवायला टाइम नाही, टाइम एवढं कामाला आल्यावर करायचं. Not easy being a farmer in this country, or indeed a loader. तुमचं दुकान आहे का? शेतकरी म्हणतात की त्यांना दाम मिळत नाहीये बरोबर. 4,000-4,200 मिळतात पर क्विंटल सोयाबीनचे. भावच आहेत ना, हा भावच आहेत ना, कमी भाव आहेत. ते म्हणतात जास्त द्यायला पाहिजे. गेल्या वर्षी 5,000 पर्यंत गेलेलं, या वर्षी फक्त 4,200. 4,200 मग भावच आहे तेवढा फक्त. तुम्ही त्यांना भाव एवढा कमी का देताय? आम्ही कशाला समोर येणारे त्या भावात घेऊ लागेल. Okay, let me turn for a moment from Maharashtra to Wayanad, where all eyes will be on that big by-election that's taking place, where campaigning ended today. Priyanka Gandhi Vadra making her election debut. Our correspondent Akshita Nandgopal and team have been tracking that campaign. This is what they saw in Wayanad, a region which, remember, was hit by horrific landslides not too long ago. Take a look. Priyanka ma'am, namaskaram. To all the people I've been speaking to in Wayanad, ma'am, they call you as Priyanka Chechi. Do you feel a similar connect? Do you feel more home at Wayanad now than Delhi? I've been given a lot of love and affection here. People have welcomed me into their homes like family, and it's really touching. It is really also an honor for me. Have you been able to learn any Malayalam? Very little. Pattan. Yes. But why Wayanad, ma'am? None so far. Why Wayanad? Did you ever decide or regret that you didn't do it a few months ago during the general elections? No, I didn't regret at all. I had taken a certain decision and I stuck by that decision. My brother is deeply connected to this area. He loves the people here. They supported him at a time which was very difficult for him. And it was difficult for him to leave. And I think that it's appropriate to be here because we want to continue that bond between him and the people of Wayanad and to continue to work for the people of Wayanad. What's your earliest and most poignant memory of Kerala? Earliest memory? Sir, she's speaking. Your earliest, most poignant memory? Even Wayanad or Kerala? I mean, Kerala,
I would say coming here to Wayanad, really, the time I came here during the landslide, it was something I'll never forget all my life. The kind of pain that I saw and the kind of resilience, the courage of people, that was something that really moved me, and also just to see the extent of the devastation and yet to see people reacting to it with such dignity, with so much courage, having lost everything, but still all of them coming together to help each other. That is not only a moment that I will remember, but it is a lesson for all of us and for the whole country. Sentiment among people that no, we won't vote for BJP, no matter what. In Kerala, in Tamil Nadu, is that sentiment? Yeah, that's what. I don't know. I don't understand how they elected Rahul Gandhi again in 2024. Because for the past 5 years, he hasn't done anything in this mandal. For the upliftment of the scheduled caste and scheduled tribe, for the upliftment of these farmers. You know that the 90% of these people in Wayanad are farmers. But do you think, you said you're very fortunate that the BJP has given you this chance. Yes. Do you think it's also because of the woman card that you're up against Priyanka Gandhi Vadra, so woman versus woman makes for an interesting battle? Of course it is. Yeah. Okay. Do you find... Woman versus woman, of course. Do you admire Priyanka somewhere? No. I have admiration for some other personalities like Sushma Swaraj, Nirmala Sitharaman. They are my icons. All one party side. Yes. But not because Priyanka Gandhi. You don't think what she's course. done is something that's admirable for a woman? What can we say? There is nothing to project for Priyanka Gandhi Vadra because she has not been elected to any positions. That just they could claim was that family domination. വയനാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? അഡ്വാൻറ്റേജ് ജനങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളാണ്. 3 ടേം MLA ആയിരുന്നു. 2014 ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ 20,000 വോട്ടിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇലക്ട് ചെയ്ത ജനപ്രതിനിധി ജനങ്ങളോട് ഉണ്ടായില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി ബിട്രേ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ടേമിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നത്. അപ്പം ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ജനങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ്. അവരെക്കാൾ ജനങ്ങളിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവമുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് മൂവ്മെന്റിൽ ദീർഘകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിൽ ദീർഘകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെക്കാട്ട് എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ. ഡബിൾ അല്ല, അതിൽ മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ്, അത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം. ഐ ആം വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ. പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽ ആരാണ്? BJP ആണോ കോൺഗ്രസ് ആണോ? പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽ ഹിന്ദു ഫാസിസ്റ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. ഇവിടെയല്ല നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹിന്ദി മേഖലയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് ഭയം കൊണ്ടാണ്. BJP എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളും LDFും UDFിലും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് പ്രിയങ്ക ജയിപ്പിക്കാൻ. BJPക്ക് ഇലക്ഷൻ ബോണ്ട് കൊടുത്താരാ? ഈ DLFൽ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ആള് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഫണ്ട് കൊടുത്തത്. അവരിൽ തമ്മിലല്ലേ ഒത്തുകളിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തില്. വയനാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ പറയണത്. Okay, away from the world of politics, let's give you something nice and cheery to end the show today. Indians have all kinds of ways to enter the Guinness Book of World Records. One such Indian has now got the record for the highest number of push-ups on one leg. We wish him well and wish all you viewers goodbye, good night, Jai Hind, Namaskar from Latur, from Maharashtra Majha. We'll be back tomorrow with another show from another part of my home state. Bye for now. Meet India's push-up hero. Rohtas Chaudhary has entered the Guinness Book of World Records for maximum push-ups on one leg. Rohtas completed 704 push-ups in an hour with a weight of 27.875 kg on his back at an event in Gandhinagar. 2024 12 जनवरी को मैंने स्पेन का रिकॉर्ड ब्रेक किया था और आज जो रिकॉर्ड हुआ है ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है. कुछ ही दिन पहले जो अपडेट था ये रिकॉर्ड गिनीज में
20 से 22 दिन पहले ही अपडेट हुआ है और उसने मेरे को फेसबुक मैसेंजर में चैलेंज किया था अपना रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट बेच के। शायद 1 महीने से कम समय लगा है उस रिकॉर्ड को आज हर भारतीय के नाम करने में मेरे को। With this, Rohtash reclaimed the record he had set earlier in this year. He says he was a boxer till a few years ago when an accident derailed his life. 2004 में मैं बॉक्सिंग करता था दिल्ली नेहरू स्टेडियम में। एक हादसे ने एक मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी बैक इंजरी हुई थी। 2 साल मैं चल भी नहीं पाया था, बेड पे रहा हूँ। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली और उसी दौरान मैंने निश्चय किया था कुछ ऐसा बड़ा करना है। Rohtash has now set his sights on a bigger record. अगला जो लक्ष्य है वो यूएसए का रिकॉर्ड है। 40 एलबीएस के साथ में 1100 समथिंग पुशअप का रिकॉर्ड है। अगला लक्ष्य मेरा वही है। Rohtash, who took up yoga in 2011, has been breaking records in push-ups since 2015. With Atul Tiwari, Bureau Report, India Today.